बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके डियर फ्रेंड्स, हमारी गुफ्तगू लास्ट क्लास में स्टार्ट हुई थी और हमारा टॉपिक था जिस पे हम बात कर रहे थे उसमें द लीगल इन्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे हमने बात स्टार्ट की और उसका एक चंक हम लास्ट क्लास में कर चुके। और मैंने आपको जहाँ पे बात को हमने स्टॉप किया था वो कॉन्ट्रैक्ट पे लाके बात हमारी रुकी थी। और कॉन्ट्रैक्ट में हमने लास्ट क्लास में वी लर्न दैट देर आर थ्री एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट: द ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में बात की थी, उसी को लेके हम आज आगे की तरफ मूव करेंगे। एंड वी स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन फ्रॉम this slide, which is explaining about the contracting and contract enforcement in electronic commerce. And by keeping in view the last discussion, we people are able to, define simple contract in traditional business, where an offer is made or a commitment with a certain terms made to another party, such as the declaration of willingness to buy or willingness to sell a product or a service. An offer can be revoked as long as no payment, delivery of a service has been made yet. जब तक डिलीवरी या सर्विस नहीं हुई तब तक हम वी पीपल द बायर एंड सेलर हैज़ टाइम टू stop this contract online. But as an offer can be delivered, or you may say that other consideration has been accepted, so the acceptance is the second phase of contract has been started. So offer का मैंने बता दिया. Number 2 पे acceptance, as I told you in last slide, in last class, that it's an expression of willingness to take an offer, including all the stated terms in that particular offer. जो offer के अंदर terms हैं, acceptance उनका मानना है, willingness to accept the stated term in the contract. जबकि थर्ड फेज इसका कंसिडरेशन मैंने बताया था आपको, ऑफर, एक्सेप्टेंस और थर्ड कंसिडरेशन. Consideration, as I told you in last class, friends, is the agreed upon exchange of something valuable, such as money, property, or future services. So when these three things has completed, when party accept an offer based on the exchange of valuable goods or services, a contract has been created. So इन तीन चीज़ों के साथ ऑनलाइन भी आपका जिस तरह ट्रेडिशनल बिजनेसेस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. सो implied contract can also be formed by two or more parties that act as if the contract exists, even if no contract has been written and signed. ऑनलाइन साइन नहीं होने के बावजूद implied contract है कि if you are willing to pay and you are agreed upon some consideration and on terms, so physical business की तरह ऑनलाइन भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है. So people in fact enter into contracts as you know on daily basis, or often you may say on hourly basis. Every kind of agreement or exchange between parties, no matter how people how simple is it, the type of it's called a type of contract, you may say.
every time the consumer buy an item at a supermarket or a store, the element of valid contract are there. For example, a store invites offer for an item at a stated price by placing their products on shelves. प्राइसेस लिखी हुई हैं, आप स्टोर मेगा स्टोर में जाके जब बाइंग के लिए गए हैं एज ए कस्टमर, सो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, तो हर प्रोडक्ट की बार्गेनिंग या प्राइस नहीं है, वहाँ पे प्राइसेस मेंशन हैं, जो स्लैब्स के ऊपर उन्होंने प्राइसेस लिख के अपने स्टोर में लगाया हुआ है. तो ये ऑफ़र जो ऑलरेडी जो है फ्रॉम द सेलर्स एंड वो ऑफर्ड डिस्प्ले है in form of price. The consumer make offer by including the willingness to buy for the stated price. And for example, the consumer might take in terms of acceptance. उसने अपने शेल्फ से उठा के चीज़ें अपनी ट्रॉली में डाल ली हैं, तो मीन्स उसने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफ़र को. और जैसे ही वो बिलिंग पॉइंट पे पहुंचता है और वो पेमेंट करता है, तो उसके पेमेंट करते ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है जनाब. अब इसमें कोई प्रॉपर रिटन ऑफर भी नहीं थी और कॉन्ट्रैक्ट की सारी क्लॉजेस को एक कस्टमर फुलफिल कर रहा होता है. सेम केस ऑन वेब, डियर फ्रेंड्स, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर द की element of traditional business practice, as I mentioned in example. So when we talk about generating contract on internet, offer and acceptance can occur when prices exchange through email, engaging the data through online, or fill the form on web pages. These internet communications can be combined with the traditional method of forming contract, such as the exchange of paper documents through fax, through verbal communication, through telephonic communication with the person. So these requirements for forming a valid contract in any electronic commerce transactions are met. So web pages invites offer for an item or a stated price by serving a web page advertisement, include information about the items. So consumer end पे जनाब, consumer make offer by including the willingness to buy that particular product for a stated price. For example, आप जब वेब पेज पे किसी ऐड के अगेंस्ट उसको अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड करने का बटन दबाते हैं, तो आप विलिंगनेस शो करते हैं. सो द वेबसाइट एक्सेप्टेंस कस्टमर्स ऑफर एंड एक्सचेंज इट्स प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स एंड इट्स शॉपिंग कार्ट चेकआउट पेज. तो वही प्रोसीजर जो फिज़िकल मार्केट में चलता है, ऑनलाइन भी उन्हीं फेजेस से गुजरते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बायर्स और सेलर्स के दरमियान फॉर्म रेगुलर बेसिस पे हो रहे होते हैं. होपफुली क्लियर होगा. एक चीज़ यहाँ पे और भी यहाँ पे मेंशन होती है कि सिग्नेचर अ सिंबल ऑफ एग्जीक्यूटेड और अडॉप्टेड बाय द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सो फिज़िकल ट्रांजैक्शंस में भी स्टैम्प वगैरह यूज़ की जाती है. इस तरह ऑनलाइन के बिजनेस में भी जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो दे यूज़ समथिंग, अ सिंबल और एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ द सेलर. सो दिस इज़ हाउ द कॉन्ट्रैक्ट्स टेक्स प्लेस ऑन इंटरनेट. होपफुली क्लियर है.